हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको यूट्यूब चैनल CivTech सिंप्लीफाइड पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेइंग एंड लेवलिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 13 ऑफ आवर ऑनगोइंग वीडियो सीरीज ऑन MCQs इन सर्वेइंग एंड लेवलिंग। ये सीरीज हमने स्पेशली गेट टेस्ट की प्रिपरेशन और SSC JE एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले इंजीनियर्स के लिए तैयार की है। तो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इनको मुकम्मल एंड तक देखें। हमारे चैनल CivTech सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल के ऊपर इन एडिशन टू सिविल इंजीनियरिंग वीडियोस, पेपरा रूल्स, जो पाकिस्तान पब्लिक रिक्रूटमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स हैं, वो भी हमने रूल बाय रूल और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए हैं। सो उन वीडियोस को भी लाइक करें और इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर ये 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सर्वेइंग फॉर SSC JE पार्ट 13 में क्वेश्चन नंबर 121 टू 130 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 121 says that an angle measured clockwise from preceding survey line to the following survey line is called. Option A is direct angle, option B is vertical angle, option C is horizontal angle, and option D is deflection angle. So A is the correct option. It's the direct angle, which is an angle measured clockwise from preceding line to the following survey line. Question number 122. The deflection angle may be directly obtained by setting the instrument to read dash on back station. Option A is 0 degree, option B 90 degree, option C 180 degree, and option D 270 degree. So A is the correct answer, which is 0 degree. The deflection angle may be directly obtained by setting the instrument to read 0 degree on back station. Question number 123. The direct angles may have any values between. Option A is 0 degree and 90 degree, option B 0 degree and 120 degree, option C 0 degree and 180 degree, and option D 0 degree and 360 degree. So all around जो है वो 0 डिग्री टू 360 के दरमियान में कोई भी एंगल हो सकता है, डायरेक्ट एंगल. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 124. इन रेलवे एंड हाईवे वर्क्स द मेथड ऑफ मेजरिंग द डैश इज जनरली एम्प्लॉयड. ऑप्शन ए डायरेक्ट एंगल्स, ऑप्शन बी डिफ्लेक्शन एंगल्स. सो हाईवेज और रेलवेज में डिफ्लेक्शन एंगल्स मेजर किए जाते हैं. सो बी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन. 125. एन एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड डैश. ऑप्शन ए direct angle, option B vertical angle, option C horizontal angle, and option D deflection angle. So an angle between the inclined line of sight and the horizontal is called vertical angle. B is the correct answer. 126. The deflection angle is measured twice, once with the telescope normal and once with the telescope reversed. Option A is true and option B is false. So yes, it is true. Deflection angles एक दफा टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन में मेजर करते हैं और देन टेलीस्कोप को रिवर्स करके मेजर करते हैं. सो ए हियर is the correct answer, which is true. 127. In locating the details of an object whose direct measurement is not possible due to some obstruction, the method used is option A by angles and distances from the same station, option B by angle from one station and distance from other station, option C by distance from two different stations, and option D by angles from two different stations. In locating the details of an object whose direct measurement is not possible due to some obstruction, the method used is option B is correct, which is by angle from one station and distance from the other station. 128. In locating the details of inaccessible objects visible at least from transit stations, the method used is option A by angles and distance from the same station, option B by angle from one station and distance from the other station, option C by distance from two different stations, and option D is none of these. So D is the correct answer, none of these. 129. The traversing by the method of deflection angle is chiefly used in option A canals, option B highways, option C railways, option D all of these. Traversing by the method of deflection angle is used in all these longitudinal structures like canal, horizontal, and railways. So D here is the correct answer. 130. The projection of a traverse line on a line perpendicular to the meridian is known as option A latitude of line, option B departure of line, option C bearing of line, and option D coordinate of line. So it's the B option is correct, which is departure
of the line. Projection of a traverse line on a line perpendicular to the meridian is known as departure of the line. B is the correct answer for this question. So this was our today's lecture, जिसमें हमने part 13 of MCQs series in surveying and leveling डिस्कस किया और इसमें हमने 10 MCQs आपके साथ शेयर किए. तो आई होप आपने इन क्वेश्चंस को लाइक किया होगा, इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और CivTech सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें. ये चैनल आपकी प्रिपरेशन के लिए और आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए तैयार किया गया है. तो इन वीडियोस को लाइक करें और इनको जरूर शेयर करें. तो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 14 में, जहां पे फर्दर 10 MCQs डिस्कस करेंगे. तो तब तक के लिए अपने ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.